बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू को स्टार्ट करेंगे विच इज़ फॉर 9th क्लास फेडरल बोर्ड एंड आई विल बी योर फैसिलिटेटर एंड माय नेम इज़ नौमान। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 विच इज़ रियल नंबर्स। और एक्सरसाइज में जाने से पहले हम कुछ डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रैशनल जो रियल नंबर्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। तो रियल नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन है जिसमें रियल नंबर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। और इसके अलावा रियल नंबर्स में हमारे पास इररेशनल नंबर्स भी आते हैं जिसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। So basically what we can say that real numbers is a combination of real numbers equals to rational number union irrational number. So इसमें हम अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे that rational numbers क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकती हैं, जिसमें आप कंसिडर कर सकते हैं दैट -2 इज अ रैशनल नंबर। इसके अलावा 0 इज अ रैशनल नंबर, 1 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स आल्सो इंक्लूड फ्रैक्शंस, जैसे आप कह सकते हैं 1/2 इज अ फ्रैक्शन। इसके अलावा डेसिमल नंबर्स जो हैं वो भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं लाइक 2.5। सो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर्स के लिए। और इसी तरह इररेशनल नंबर्स को भी हम एग्जांपल के साथ बता सकते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ सकती हैं लाइक √3 एक इररेशनल नंबर है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं पाई की वैल्यू, और हम सब जानते हैं दैट पाई की वैल्यू जो है वो हम 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम 3.1416 ये वैल्यू भी पाई के लिए यूज़ करते हैं। सो पाई भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। सो हमने क्या डिफाइन किया? सबसे पहले रियल नंबर्स को डिफाइन किया। रियल नंबर्स इंक्लूड रैशनल नंबर्स एंड ऑल्सो इरेशनल नंबर्स। इसके बाद हम सेकंड डेफिनेशन की तरफ जाएंगे विच इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब हम डिफाइन करेंगे दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करते हैं द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है विच इज दैट इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा। ये जो वैल्यू है इसमें दो पार्ट्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स, जिसमें a ये रियल नंबर है जो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो b है वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सो इसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं, जैसे लेट्स सपोज z की वैल्यू हम ले सकते हैं विच इज 5 प्लस 2 आयोटा। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं दैट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं दैट 5 इज अ रियल नंबर एंड 2 इज द इमेजिनरी नंबर। तो इसमें हम एक सिंबल देख रहे हैं, द सिंबल आई। ये सिंबल क्या है? सिंबल जो हम इसमें यूज कर रहे हैं विच इज लाइक आई, इसको हम पढ़ते हैं आयोटा। सो बेसिकली ये आयोटा ही है जो इमेजिनरी पार्ट है, जिसको हम इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। आयोटा को हम इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। दिस इज द इमेजिनरी यूनिट। और आयोटा की वैल्यू हम क्या यूज करते हैं? आयोटा इज डिफाइंड एज आयोटा इक्वल्स टू √-1। एक वैल्यू हम ये यूज करेंगे आयोटा इक्वल्स टू √-1। और हम आयोटा स्केयर की अगर वैल्यू लें तो आयोटा स्केयर की जो वैल्यू आएगी विच विल बी इक्वल्स टू -1। ओके, नेक्स्ट हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन को डिफाइन करेंगे। सो नंबर लाइन क्या है? ये हमारे पास नंबर लाइन है, जिसको अगर हम लेबल करें तो सेंटर में हमारे पास 0 है। अगर हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और अगर हम लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो सारे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे। सो डिफाइन कर लेते हैं नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि रियल नंबर्स को डिस्प्ले करती है, जिसमें 0 भी आता है, और इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करते हैं।
इट मीन्स दैट जीरो से लेफ्ट साइड पर अगर हम जाएंगे तो इट विल इंक्लूड द नेगेटिव नंबर्स विच इज -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। सारे नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे और सारे पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो राइट साइड पर आ जाएंगे विच इज 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। सारे पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड पर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। हम नंबर लाइन यूज क्यों करते हैं? नंबर लाइन डिस्प्ले करती है रियल नंबर्स को इन द असेंडिंग ऑर्डर, और इसको हम एडिशन के लिए सॉल्व यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन प्रॉब्लम्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन 1 की डिमांड है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन, जिसमें सबसे पहला पार्ट है हमारे पास विच इज 3/4। सो 3/4 नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। इसके लिए हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक सिंपल नंबर लाइन है जिसमें सेंटर में हम 0 यूज करेंगे, देन पॉजिटिव नंबर्स ऑन द राइट साइड 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, एंड लेफ्ट साइड पर हम नेगेटिव रियल वैल्यूज को यूज करेंगे, -1, -2, -3 ऑन द लेफ्ट साइड। सो अगर हम 3/4 को डिवाइड करें, so we can get the number in decimal. 3 divided by 4, it will give us an answer of 0.75, which means इसका जो आंसर है वो है 0.75। so हम इस नंबर को देखें तो ये वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 1 से लेस है। इट मीन्स दिस वैल्यू विल लाई इन बिटवीन 0 एंड 1। सो यहाँ पर हम इसको डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर डॉट बनाने के बाद हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे विच इज 3/4। सो दैट इज सिंपल। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, 3/4 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इज -1/3। अगेन अगर 1/3 को हम डिवाइड करें, 1 divided by 3, it will give us 0.333 to so on. So it will be negative 0.333। अगेन इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अगर नंबर लाइन को हम ड्रॉ करें, सारा सेम प्रोसेस है। In the middle there will be a value 0, then 1, then 2, on the left side -1 and -2. So the number is negative, which is -0.33, which will be in between 0 and -1. So this number will exist in nearest to 0. So this is -1/3. Now we have solved the second part. Moving toward the third part. Third part is a mixed number, mixed fraction, which is 1/2. तो इसको सबसे पहले अगर हम सॉल्व करें, so हम 4 को टाइम करते हैं with 2, 4 times by 2, then हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम +1 करेंगे। 4 times 2 is 8, 8 plus 1 is 9, so it is 9/2. And we can now divide the value which is 9 divided by 2. अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं, 9 divided by 2, we will get 4.5. So this is 4.5. अब ये जो हमारे पास वैल्यू है 4.5, इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन द मिडल वी नो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेम बिल्कुल इसी तरह हम लेफ्ट साइड पर जो है नेगेटिव नंबर्स बना लेंगे, -1, -2, -3, this is -4. So the number is greater than 4 and less than 5. So it means it will be in the middle of 4 and 5. So यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट को मार्क करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 4, 1/2, which is a mixed number. So ये हमने थर्ड पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लिया। सेम इसी तरह जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास रूट है विच इज -√8। -√8 को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप √8 का जो आंसर है उसको देखते हैं, ओके, इसके हमारे पास आंसर आता है -2.828। √8 विच इज नेगेटिव, हमारे पास क्वेश्चन था -√8, इसको जब हमने सॉल्व किया इसका आंसर आया -2.828। अगेन इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है।
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सेंटर में हमारे पास 0 है, देन 1 2 3 positive numbers on the right side and negative numbers on the left side, -1 -2 -3 up to so on. So the number is between -2 and -3. It will be closer to -3. So this is -√8. So this is our fourth question that we have solved. And the fifth question is same, which is √8. The difference is उसमें से जो root है वो positive है. Then sixth part को हम solve करते हैं और sixth part के अंदर हमारे पास जो question है is a mixed number -4 1 by 2. Again इसको simplify करने का method 4 times by 2 then plus 1 it will be -9 by 2 and it will be -4.5. तो अब हमने -4.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. In center we have 0, -1, -2, -3, -4, -5, and same as like on the right side 1, 2, 3, 4, and 5 on the right side. So this number is between 4 and 5. So in the center यहाँ पर decimal place करेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर है -4 1 by 2. So this is our sixth part. Then we have seventh part, which is 1 by 3. And the last part says that it is -7 by 8. हम इसके बाद जो 8th part है उसको solve कर लेते हैं. So the 8th part is -7 by 8. इसको हम अब simplify करेंगे on the number line. इसको represent करेंगे. Same method. This is 0. Then we have 1, 2, 3, 4, and -1, -2, -3. इक्वल स्पेसिंग रखनी है हमें. और 7 by 8 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम देख सकते हैं that dividing 7 divided by 8 it gives us 0.875. So this is -0.875. So the number is in between 0 and -1, which is closer to -1 because it is -0.8. So यहाँ पर decimal place करेंगे और ये हमारे पास आंसर है -7 by 8. ओके अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज. हमने इनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर मेंशन करना है. लाइक इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट y minus 2 व्हिच इज इक्वल्स टू y minus 2. सो अल्टीमेटली अगर हम देखें जब हम इसको सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली इसका आंसर y minus 2 ही आएगा. सो जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. दिस इज multiplicative identity for question number part 1. And then in the second one, the question second says 0.2 times by 5. So इसको हम solve करेंगे इसका आंसर आएगा 1. इसको हम कहते हैं this is multiplicative inverse. ये है हमारे पास multiplicative. This is multiplicative inverse. Then in part 3, x plus 2 plus y which is equals to y plus x plus 2. So ये तो बहुत common है. This is commutative property with respect to addition because you can see there is an addition in between the part. So this is commutative property with respect to addition. Commutative property which is with respect to WRT means with respect to addition. Then in the fourth part we can see that this is negative 3b and this one is positive 3b. Same numbers with different signs, positive and negative. So this one is additive inverse. This is additive inverse. In the fifth part, this is x plus 5 minus 1 which is equals to x plus 5 minus 1. So यहाँ पर हम addition भी use कर रहे हैं. इसके अंदर हम
सब्ट्रैक्शन भी यूज कर रहे हैं. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. दिस इज associative property with respect to addition. And for the last part, which is minus 3 to minus y, which is equals to minus 6 plus 3y. And इसमें हमारे पास नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसमें हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद ब्रैकेट 2 minus y. So this is distributive property. Distributive property of multiplication, because 3 जो है वो अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा. So this is distributive property of multiplication over, and there is a subtraction in between the numbers. So this is multiplication over subtraction. And then in the next part for question number 3 now. Question number 3 में हमने क्या solve करना है? We need to represent the following numbers on the number line. And the first part says that which is x is less than 0. हमने इसको number line पे represent करना है. Again, number line को हम define कर चुके हैं. यहाँ पर number line हम बनाएंगे using the same method. In center we have 0, then 1, 2, 3 up to so on, -1, -2, -3 up to so on. And we can see that x is less than 0. So if x is less than 0, what we need to do? It means x is less than 0, the x will start from -1. हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे और उसके बाद एरो जो है वो हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे और हम इस सर्कल को फिल नहीं करेंगे. हम इसको फिल कब करेंगे? लेट्स सपोज अगर यहाँ पर इक्वल टू होता तो हम इसको फिल कर देते, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो हम इस सर्कल को फिल नहीं करेंगे. This representation for x is less than 0. And then for the second part is -3. X is greater than -3 and less than 3. ये हमारे पास second question है. Again, this is 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. तो इसको अगर हम start करें, we can see that x is greater than -3 and less than 3. So what we need to do? यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे और यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे और उसके बाद इसको हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे, which means ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -3 x and 3. What does it mean? X is greater than -3, x is greater than -3, that is why it is moving towards the right, and x is less than 3, that is why starting from 3 it is moving towards the left. So ये हमारे पास representation for question number 2. Then in the third part is x is greater than equal to -8. x is greater than equal to -8. अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, -0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. ये मैंने नेगेटिव नंबर्स की नंबर लाइन ड्रॉ की है. इसमें हमें पता है कि जो x की वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8. सो हम क्या करेंगे? हम -8 से स्टार्ट करेंगे और इसको हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे और इसको इस बार
सर्कल को हम फिल भी कर देंगे because it is also equal to. So this is the representation for x is greater than equal to -8. This is our third part. Fourth part is very simple, and now we will do fifth part. Okay, पहले fourth part कर लेते हैं. Fourth part says that x is greater than 0. So if x is greater than 0, in the center we have 0, 1, 2, 3. What we need to do, x is greater than 0, we need to start from 0 and then move towards the right because x is greater than 0. So the x की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी और 0 से बड़ी वैल्यू है. So that is why we are moving towards the positive real numbers. So this is the solution for the fourth part. Then in the fifth part we have x is less than -3. X is less than -3. This is 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4. So in this case, we can see that x is less than -3. So अब इसको -3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि हम उसको स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट कर दें. तो यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे, इसको फिल नहीं करना और हम एरो जो है वो लेफ्ट साइड पर ड्रॉ कर देंगे. दिस रिप्रेजेंट्स x is less than -3. आप इसको -4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. That will be also correct. And in the last part, part number 6, in part number 6, it says that -4 x and which is equals to 4. अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? x is greater than -4 but less than equal to 4. So अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. So in the center we have 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. So we need to start from -4 and up to 4. और हम देख सकते हैं that x is less than equal to 4. Less than equal to 4 means हम इस सर्कल को क्या करेंगे? फिल करेंगे और यहाँ पर हम straight line draw कर देंगे. So that is the range for the number line to represent that x is greater than -4 but less than equal to 4. I hope you guys understand, and we will continue the remaining exercise in the next part. Thank you.